India is a democracy. People have the liberty to hold award ceremonies, as many as possible. And if the film industry patronizes it, there's no harm in it. It would be unfair to say, let's just have one and not have the others. That would be wrong. So I wouldn't propagate that. And why do you continue the association as brand ambassador? Is there one particular reason do you see the IFA awards growing? Is that why you've continued to be associated? I've always personally believed in the fact that Indian cinema is big enough and is deserving enough to be seen outside Indian shores. We have a problem of language because our language is mainly constrained to people who are of Indian origin. But with dubbing, with subtitling, the world over, films are seen and they are appreciated. And I'm sure that that Indian cinema, with the kind of content that it has, and the kind of popularity that it enjoys in countries which have no similarities either in language or culture with us, is truly astonishing. I mean, you have Egypt and Algeria and Morocco and Nigeria and Tunisia, Romania, erstwhile Soviet Union, Japan now is very big, China is watching our films, the Far East, South America. I came to know recently that there are people in Peru who watch our films. So somewhere something is appealing to them. And it's obviously the content of Indian cinema that is going out to them. And if they're liking it, why shouldn't we propagate it and market it in a proper professional manner? सर 4 साल का आईफा अवार्ड हुआ, 5वां इस ड्यू इन में, आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि आईफा साल दर साल जो है और प्रगति कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी होती है अपने आप को इनके साथ जोड़ने से, क्योंकि जो इनके साथ जो पूरी टीम है बड़ी प्रोफेशनल है, बड़ी एफिशिएंट है और बहुत ही सही तरीके से एक डिसिप्लिन मैनर में आईफा अवार्ड्स को प्रोत्साहित कर रही है और उसका प्रचार कर रही है। सर इसमें से क्या फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या निचोड़ आ सकता है? आईफा अवार्ड्स को जितना हम और करें उसमें फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या निचोड़ आएगा? निचोड़ ये है कि हमारी फिल्में जो हैं वो अन्य देशों में जब ये अवार्ड सेरेमनी होती है तो वहाँ के लोग हमारे इवेंट को देखते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा जागती है कि भाई ये इंडियन फिल्म्स क्या हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के नज़र से और जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पर जो टेलीविज़न देखते हैं और जो वहाँ पर इंडियन केबल चैनल्स देखते हैं उनकी नज़र से जाहिर है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलता है। Where are you? Show your face. Yeah. It's been a wonderful experience. I've visited Singapore many times and I've always loved the way they run their country. It runs smoothly, efficiently, with a lot of discipline. I'm truly appreciative of discipline, and I feel that discipline can become the yardstick for any nation to make progress. If Singapore has become a world-class city and a world-class country, you will have to admit that it is because of their very strong discipline. And if we could bring even a small essence of that discipline in our own country, not just the film industry but the entire country, would make a huge amount of progress. अमित जी, जिस तरह से आप आईफा के बारे में बोलते हैं ऐसे लगता है कि एक भावनात्मक संबंध भी है आईफा के साथ आपका, मगर आपके साथ वाले फ्रेटर्निटी में जो दूसरे जो फिल्म स्टार्स या प्रोड्यूसर्स हैं, क्या उनका भी आईफा अवार्ड्स की तरफ का झुकाव ऐसा ही भावनात्मक है? ये प्रश्न आप उनसे पूछिए। चूँकि आप इतने बड़े नुमाइंदे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, आपको क्या लगता है? मैं अपने लिए कह सकता हूँ, उनके लिए मैं नहीं बोल पाऊँगा। How important is Singapore then for the film community as far as a location for shooting goes, or an option to shoot abroad other than Europe, which has been? Yeah, I think well, Singapore has a very large Indian community living there, so this will bring the Indian film industry, or let's say Bombay, within grasp, or within inches, or within feet, for them to be able to see all the film stars. Singapore has traditionally been culturally quite close to India, and a lot of films are made in Singapore. I know that a lot of the southern film industry goes there because the Tamil population
in Singapore is very vast. I think it's the largest. So a lot of the South industry goes there. But I myself have been to Singapore to shoot a film. I shot sequences of Suhag in the mid-70s and late 70s in Singapore. And we had wonderful facilities there. And as I said, people are always smiling, and everything is very efficient and neat and clean and disciplined. So you like working in an environment like that. But from the standpoint of the academy, how important was going beyond the cultural importance? How important was what we're talking about here, the shooting location and the importance as a future for Indian cinema? How much part once the event happens, and thanks to people like you from the media who will film it, who will project it, people in the entire country will get to see it. It will always carry a package which is promotional of that area. We have Singapore Tourism Board associated with us, so they will be packaging what Singapore has to offer, and you get to see these sites, and you get to see these locations, and perhaps an idea will germinate in some producer's mind to go and shoot there, and perhaps this idea will germinate in some family in India that maybe we should go and take a holiday in Singapore. Holly? Actually, I haven't finished. I just have to ask one question. I know it's not related to it, but it's something to do with Indo-Pak series match. So how much are you looking forward to it, and are you going to be watching this match? Yes, Indo-Pak series, whether it is cricket or hockey, has always been extremely interesting. A lot of excitement. Needless to say, I am equally excited about this, and we're all looking forward to it. I think it's wonderful that the two countries are playing. We'll see a lot of talent, and yes, I will be watching it. So you think IFA Awards, the 4 IFA Awards in India has improved the content of Indian cinema already in terms of? I don't think that IFA Awards are designed to improve the content of Indian cinema. I think content of Indian cinema is more a creative call on the part of producers and directors, and that is continuously improving and getting better day by day. For that level or that era of generation, I'm not trying to compare what used to happen in the 50s and 60s, but I'm saying that for this era, there is a continuous churning process where they want to improve the quality and the content of Indian cinema. To say that IFA is going to be responsible for it is wrong. IFA is merely going to promote that content into a region where it has not been promoted. ज़्यादातर फिल्मों में आपका नाम जो रहा है वो विजय रहा, तो क्या ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट रहा है, कोई क्यों, किस तरह? ये आप सलीम जावेद साहब से पूछिए। उन्होंने जंजीर में मुझे विजय नाम दिया, उसके बाद कई उनकी फिल्मों में मेरा नाम विजय रख दिया गया, लेकिन ऐसा हर फिल्म में तो नहीं है। ज़्यादातर कभी खुशी कभी गम में था। तो अभी की फिल्म, लेकिन पहले अगर एसोसिएट किया जाए अगर आपको, तो अगर कहाँ भी जाए तो अरे मैडम, जब एसोसिएट किया जा रहा था तब आप पैदा भी नहीं हुई थी। तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए जानना चाह रही हैं तो आप सलीम जावेद से पूछिए क्यों उन्होंने नाम दिया। मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई भी नाम देते मैं काम कर देता। तो कोई डेलिब्रेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, वुमेन्स डे आ रहा है, तो ऐसी कोई ख्वाहिश, मतलब क्या अगर रीबर्थ किया जाए तो आप वुमेन करना चाहेंगे? फ्यूचर जो है वर्ल्ड का, वो महिलाएं जो हैं वो कंट्रोल करने वाली हैं। विमेन आर गोइंग टू रूल, ये तय है। बस अब इससे और ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। So would you like to give out a message on Women's Day, whatever message that you would like? I have always felt that women are 50% of the nation, 50% of the house, and a very dominant portion in domestic life. If they run the house, they manage the house, they bear children. If I don't have a conducive atmosphere in my home, when I get back from a hard day's work, it would be ruinous for me. So as a creative person, it's wonderful to go home and find that your home is peaceful, is full of harmony, and everything is in place, and you're getting the right food to eat, and your things are absolutely in order. So women play a very, very important part in creativity, in day-to-day life, and we love them. सर, अभी पिछले 1-2 सालों से देखा जाए कि ऑस्कर्स में हिंदी फिल्मों का या इंटरनेशनली हिंदी फिल्मों का ज़्यादा जोर हुआ। नहीं, ज़्यादा आप इसको पब्लिसिटी का शेयर मानते, क्योंकि पहले भी अच्छी फिल्में बनी हैं, लेकिन ऑस्कर्स में इंटरनेशनली इतना नाम नहीं बना पाया। तो पब्लिसिटी को इस पर देंगे या किस? मेरा ऐसा मानना है, इसकी 2-3 वजह हैं।
एक तो ये कि विश्व जो है वो छोटा होता चला जा रहा है। अमेरिका जो है वो ट्रेडिशनली बड़ा ही अपने आप को ककून में रखता है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसको कम पता रहता है। लेकिन अब टेलीविज़न और मीडिया और टेलीफोनी और कम्युनिकेशन और आईटी की वजह से सारी चीज़ें बहुत छोटी हो गई हैं। हमारे देश के बारे में भी उनको बहुत जानकारी मिलने लगी है। एक बात ये। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी देश इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करता है वो अमेरिका को बहुत आकर्षित होता है। तो अब क्योंकि भारतवर्ष जो है वो इकोनॉमिकली तेज़ हो रहा है तो सडनली यहाँ पर बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। तो इसका बुरा ना माने, लेकिन कमर्शियल एक इंटरेस्ट है कि यहाँ पर हम पैसा बना सकते हैं या यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अगर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो भैया इनका खाना भी खाओ, इनका कपड़ा भी पहनो, इनका फिल्म भी देखो। फिल्मों में जो होली होती है वो ज़्यादातर जो भी ड्रामेटिक सीन या कोई भी क्लाइमैक्स है तो उसको होली को ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे आपने रंग बरसे या जो भी फिल्म है तो होली को ही क्यों आपको लगता है इम्पोर्टेंट दिया जाता है? नहीं, होली दिवाली कोई भी त्यौहार नहीं सर, ज़्यादातर होली है। अच्छा त्यौहार है, उसमें गाना बजाना होता है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, अच्छे अच्छे अलग अलग रंगों में दिखते हैं। क्या उसमें, ये तो एक क्रिएटिव डिसीजन है, इसमें कोई ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण बात मत लगाइए।